हाय वेरी गुड इवनिंग। तो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया था। तो आप बच्चों को ईमेल आई होगी। डियर कैंडिडेट, काइंडली रिफर टू द इनक्लोज्ड अटैचमेंट ऑफ द डिटेल breakup branch wise for the time and duration of the written test for the post of graduate apprenticeship training, which is scheduled on 25th of January 2023 on Wednesday। तो ये ईमेल आई होंगी बच्चों को। बच्चों के पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज होंगी कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे रिटन टेस्ट में, या फिर रिटन टेस्ट जो होगा वो कैसे होगा, और क्या हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ साथ लेकर कैरी करना है, क्या ऑन द स्पॉट वहाँ पे क्लैरिटी हो जाएंगी, क्या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस सारे बच्चों का सेम डेट पे होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगा। तो जिन बच्चों ने ये ईमेल रिसीव किया है, और इसके साथ एक अटैच्ड आप बच्चों आपको वो मिली होगी, एक पीडीएफ होगी जिसमें आपका नाम होगा। ये रहा। तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द रिटन टेस्ट फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सिविल के बच्चे हैं सारे, पवन, विवेक, प्रतिभा, ये सारे सिविल के बच्चे हैं। इनका जो रिटन टेस्ट होगा वो डेट ऑफ रिटन टेस्ट क्या है और इनकी टाइमिंग देख लो क्या है। इनका 25 को ही है, और 9 से 10 बजे तक है, 1 घंटे का होगा पेपर। दूसरे ब्रांच के जो बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस वाले, तो कंप्यूटर साइंस वालों का देख लो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का भी 25 को है, इसके 15 मिनट के बाद 10:15 से 11:15 तक 1 घंटे का होगा। मैं कुछ बच्चों का नाम लेता हूँ। इसमें है अरुणा एम, पवित्रन, शिरिंधी, चंद्रशेखर, जीएस, प्रज्वल। तो these are the students whose names are there in this list. And further, similarly, for these are the students of computer science and engineering, and their entrance or their test would be organized at 10:15। तो सारे ऑलमोस्ट सारे ट्रेड का सेम डेट पे है। आप यहाँ देख लो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स। तो इनका भी 25th को है, 11:30 टू 12:30 इन बिटवीन, फॉर 1 आवर। जस्ट आफ्टर दे आर जस्ट ऑफरिंग 20 मिनट्स, सॉरी 15 मिनट्स difference. Similarly, for I would like to take few names of electronics and communication: Fazil Basha, Sandhya, Priya NV, Shruti Rajwal, Yamuna K, कनन के, श्रद्धारा एस, चंदन आर, लाइक दिस। तो सिमिलरली जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई के बच्चे हैं, उनका भी 25 को है, उनका 1 से 2 बजे तक है। और आप 1 घंटे पहले पहुंच जाना सेंटर पे। और फाइनली मैकेनिकल की भी है, उनका 2:15 से 3:15 तक का है। ठीक है, तो ये सारे बच्चे हैं और ये सारे डिटेल्स है, तकरीबन 191 बच्चों का है। और यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने क्या लिखा है कि documents to be produced in original along with one set of xerox copy with appearing for the written test। जब आप written test के लिए जाओ तो आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाओ, और आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक जीरोक्स भी लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ पे जब आप टेस्ट में अपियर होंगे तो वो आपसे वो जीरोक्स वाली चीज़ें ले लेंगे और आपको फिर अपियर होना है। दूसरी चीज़, वो ओरिजिनल इसलिए मांग रहे हैं कि पॉसिबिलिटी होती है कि मे बी दे कुड लाइक, क्योंकि 191 स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी मच स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं ये। तो दिस इज देयर इज द पॉसिबिलिटी लाइक दे कुड क्लैरिफाई द रिजल्ट, दे कुड अपडेट अबाउट द रिजल्ट्स एंड ऑल ऑन द स्पॉट, राइट, मे बी बाय इवनिंग और समथिंग like this। तो आप लोग you go, my best wishes with you all। You must appear for the written test, like maybe certain questions would be like maybe some random normal aptitude based questions. At the same time, there will be more questions from your specialization, from which trade you come from. You are from mechanical, there will be core mechanical questions. You are from electrical, there will be core electrical questions. This is the highest possibility. And of course those students are eligible who have finished their BTech on 2020 or after 2020, like 2020, 2021, 2022. These three batches, 3 years students are eligible. And of course many of you, or you already have got these emails. So those who have got these emails, they can move to Bangalore. And yeah, this is the address. Like like if you
deboard your train or from anywhere, like from airport or from the railway station, you can ask the auto driver that I wanted to go to Jalhali post Bharat Electronics Limited bill. They will like take you to this post, to this locations, right? You can also take the help of Google Map, and I have already visited this center. So the environment is very clean, quite trees and all are there. Staffs are really nice, good staffs are there, very nice and polite staffs are there. They are very much cooperative. Okay, so thank you very much. If you guys still have some questions like no, if maybe many of you are from North India who is not knowing, yeah, Bangalore is very new place for me. How can I go there? So don't worry, you go like you go to Bangalore. You once you deboard the train, just beside the railway stations, there are multiple PGs available. PGs available where you have to pay for 500, 1,000, 1,200 rooms are available as per your own comfort. So you can book the room on the spot. I could say like it will take around 100 meter or 200 meters from the railway stations. Rooms are available, very much easily available. If you want some certain contact number, I can drop in the comment sections also. Rooms are very much available, and of course, one good thing about Bangalore is weather is very pleasant. Maybe if you're traveling from North India, especially if you're traveling from Delhi, and definitely you have to carry blanket on all. But once you go there, na, things are you need not to wear sweater or jacket. You could like roam in just half t-shirts and shorts. Okay, so thank you very much. If you have any questions, please do ask me in the comment sections. So once again, congratulations to all those students who have been shortlisted for the written test. At the same time, my best wishes to you all, and you must go there, give your entrance, give your exam, and thank you very much. Best of luck.